जो गिर कर संभल जाता है वो अक्सर जिंदगी समझ जाता है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ बलवीर सिंह। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स हैं एंड इडियम फ्रेज हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, इनफॉलिबल। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, इसके लिए वन वर्ड है इनफॉलिबल। वन हु इज out to subvert a government, anarchist. One who is out to subvert a government, anarchist. Next, one who is recovering from illness. One who is recovering from illness, convalescent. One who is all powerful, omnipotent. One who is all powerful, omnipotent. Omnipotent. Next, one who is present everywhere, omnipresent. One who knows everything, omniscient. ये जो एक जैसे वर्ड्स हैं, omniscient, omnipotent, omnipresent, इनमें से कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए वन हु नोज एवरीथिंग। ये एवरीथिंग यानी सब कुछ जो जानने वाला हो। तो ओमनीसियंट, शियंट, सियंट लास्ट का ये हमने थोड़ा सा याद रखना है। और हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर प्रेजेंट, हर जगह जो मौजूद है। तो ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट से प्रेजेंट ये जो है दोनों मिल जाएंगे, इससे हमें कोरिलेट करने में आसान हो रहेगा। वन हु इज ऑल पावरफुल, ऑल पावरफुल, पीओ, पावर से ये पीओ, पोटेंट, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे तो आसानी रहेगी। नेक्स्ट है वन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, mercenary. One who has no money, pauper. One who changes sides, turncoat. One who collects stamps, philatelistus. The action of looking within or into one's own mind, introspection. One who has narrow and prejudiced religious views, fanatic. A person who is indifferent to pain and pleasure, stoic. One who does not take any intoxicating drugs, teetotaler. One who does not take any intoxicating drugs, teetotaler. One who amuses himself by love making, philanderer. Easily duped or fooled, gullible. To fall or impress, disapproval of something or someone, deprecate. One who loves books, bibliophile. A dancer on rope, acrobat. A place of permanent residence, domicile. Government by the nobles, aristocracy. Government by the few, oligarchy. One who eats everything is omnivorous, the study of teaching, pedagogy. One who loves mankind, philanthropist, philanthropist. One who loves mankind. One who hates mankind, misanthrope. One who hates mankind, misanthrope. A person who is womanish in his habits,
effeminate, unconventional style of living, bohemian, sit on the fence, avoid making a decision, idiom phrase. Next, a bone of contention, a source of continuing disagreement. काफ़ी इम्पोर्टेंट ये इडियम्स हैं, कई सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं. हॉब्सन्स चॉइस, नो अल्टरनेटिव्स, हॉब्सन्स चॉइस. नेक्स्ट है टू कीप वंस हेड ऑन, टू रिमेन calm. Next, fool's paradise, false hopes for a foolish person, false hopes for a foolish person. To beat about the bush, to boast about oneself. Next, the act of killing one's wife, soricide, a song embodying religious and sacred emotions, hymen. A cock and bull story, a foolish and concocted story. Ill at ease, feel uncomfortable, read between the lines, read carefully to get the hidden meaning. To hold a brief for, to defend someone. Once in a blue moon, on rare occasions. To grease the palm, to bribe. A close shave, a narrow escape. To lose face, to be humiliated. To be at loggerhead, to face stiff opposition. A pipe dream, a impracticable plan, piece of cake, easy or simple task. Let the cat out of the dog, to reveal a secret. Gift of gab means the ability to speak well. Next है burn one's fingers, that one has done. Suffer for something that one has done. Burn one's fingers means suffer for something that one has done. Break the ice means to overcome initial shyness. To cry wolf, to raise false alarm. Very important idioms phrase हैं ये, कई बार पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं. डार्क हॉर्स, लो प्रोफाइल पर्सन with potential. The last straw, the final problem in a series of problems. The last straw means the final problem in a series of problems. Custom of having more than one husband at the same time, polyandry. Scientific study of the eye and its disease, ophthalmology. A speech without preparation, extempore. A poem of mourning, elegy. One word substitution say one whose parents are not alive, उसे कहते हैं orphan. A person who readily believes others, credulous. Next, a number of ships, fleet. A sea abounding in islands, archipelago. A man of lax character, या lax moral, licentious. A government by the nobles, aristocracy. A government by the nobles, aristocracy. तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट
idiom phrase and one word substitutions, जो कि पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं कई बार। आई होप कि आपको इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। टीजीटी आर्ट्स का कमीशन 13 दिसंबर को बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक माई वीडियो and share and subscribe my YouTube channel. Thank you very much.